Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are healthy. See, as you all know, we have completed our chapter. So, from today we are going to do textbook exercise and worksheet exercise. Okay. So, today we are going to do textbook exercise. So, open your textbook and we'll quickly revise our chapter. So, in our chapter 2, keeping safe, there are safety at home, at school, and on the road, and first aid, which we have learned. Okay, so पहले तो why we need rules, मतलब safety rules, हमें क्यों safety rules चाहिए? So we should take care of ourselves and stay safe from injury. To avoid injuries, we should follow some simple safety rules. इंजरी को अवॉइड करने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना. सो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स थे? सेफ्टी एट होम. तो देर आर 1 2 3 4 5 safety rules are there. First rule is, do not leave your toys, bags and books lying on the floor. You might trip over them and injure yourself. Second rule is, be careful while walking on wet bathroom floors. You might slip on the floor and get hurt. Third rule is, never touch electric switches, plugs or wires with wet hands. You might get an electric shock. Do not put your fingers into plug points. And do not go near the gas stove or play with sharp objects such as knives and scissors. You might burn or cut yourself. And last rule is, do not try to light firecrackers by yourself. So these are the rules which we have to follow at home. And second tha safety at school. So we have first rule, never run around benches in the classroom. You might fall down and hurt yourself. Second rule is, do not run while climbing up or climbing down the stairs. You might trip or fall down. Third rule is, do not get into or get off a moving bus. Always stand in a queue and wait for your turn. And last rule is, never push your friends while playing. Both you and your friends might get hurt. Wait for your turn while playing on swings. So these are the rules which we have to follow at school. See, ये हुए safety at home and safety at school. Now turn the page number 24. There is safety on the road. So here are some rules. While crossing the road, first look towards your right, then left, and then right again. If it is clear, only then cross the road. Next rule is, do not stick your face or any part of your body out of moving vehicle. Third rule is, do not play on the road. Second rule is, use a zebra crossing or a subway to cross roads. And last rule is, always walk on the footpath. So these are the rules which we have to follow on the road. And there are traffic signal lights which say something. See, it is here. For the vehicles, green light says go, red light says stop, yellow light says wait or drive ahead carefully. So these are the traffic signals
traffic signal light says. So these are the rules, and then in the end we have learned about first aid. So what is first aid? So the immediate help given to an injured person is called first aid. And which things are in first aid box? So there are, see, it contains things such as antiseptic lotion, antiseptic cream, band-aid, bandage, scissors, gauze, cotton, gloves and syringes. फिर हमने क्या सीखा था? If we have small cuts or wounds, so what we have to do? So here it is. For small cuts and wounds, wash the area with water, wipe it gently and put an antiseptic cream. Then tie a bandage or a clean handkerchief around the wound. If the wound is deep, go to a doctor immediately. तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? इमीडिएट हेल्प होती है इंजर्ड पर्सन की, उसे हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है? हियर इट इज़, यहाँ पे दी गई हुई है. एंड अगर हमें छोटा सा कट लग गया तो हमें क्या करना है? वी हैव टू वॉश दैट एरिया एंड देन एंटीसेप्टिक लोशन एंड क्रीम. अगर ज़्यादा कट है तो हम कहाँ जाएंगे? सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे. तो इट इज़ अवर चैप्टर. सी द पेज नंबर 26. हियर इज़ अ समरी में भी वही पॉइंट होते हैं जो हमें चैप्टर के एंड में पूरा चैप्टर का जो कंक्लूज़न होता है वो इसमें दिया जाता है. तो व्हाट वी हैव टॉट इन chapter is we should follow safety rules to avoid getting injured. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए इंजरी से बचने के लिए. सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड एवरीवेयर, एट होम, एट स्कूल एंड ऑन द रोड. राइट. सेफ्टी रूल्स हर जगह हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हमें हर जगह खतरा रहता है, हम कहीं इंजर्ड ना हो जाए, है ना. And a first aid box contains things needed to give first aid. Example, antiseptic lotion, band-aid and cotton. Okay, so this is our chapter. Now we'll solve exercises. Let's understand. यहाँ पे first exercise है objective type questions. See the exercise A. Fill in the blanks with the correct words. Okay, so first one we have V blank. और आपको यहाँ पे ही देखो ऑप्शंस दिए हैं should and should not. सारे जो blanks है उसमें यही ऑप्शन दिए हैं. तो आपको क्या करना है? what you have to do that we have to take correct words and write down in a blank. जो करेक्ट है उस सेंटेंस के लिए वो हमें उसमें लिखना है. तो फर्स्ट वन वी हैव वी ब्लैंक पुट अवे आवर टॉयज इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग. हमें हमारे टॉयज़ है वो प्रॉपर प्लेस में रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? वी शुड और वी शुडंट. तो ऑफ कोर्स वी शुड, है ना. तो आंसर इज शुड. सो यू हैव टू टेक शुड हियर एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक. सेकेंड ब्लैंक इज वी ब्लैंक रन वाइल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स. हम स्टेयर से चढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू रन और वी शुड रन और वी शुडंट रन. ऑफ कोर्स वी शुड नॉट रन, है ना. तो आंसर इज वी शुड नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स.
Third one we have, we blank play on the road. हमें रोड पे खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? तो ऑफ कोर्स वी शुड नॉट, है ना? सो आंसर इज वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. Fourth one is, we blank walk on the footpath. हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो ऑफ कोर्स चलना चाहिए, फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. तो आंसर इज वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. Fifth one and last one is, we blank give immediate care to an injured person. हमें एक इंजर्ड पर्सन है, उनकी तुरंत ही फर्स्ट एड करनी चाहिए. येस और नो? येस. तो आंसर इज वी शुड. वी शुड give immediate care to an injured person. Now see the exercise B. Write T for the true and F for the false statements. See, we have many statements here, and if it is right, so you have to write down T here, or if it is false, so you have to write down F here. First one we have, we can go near a gas stove and play. हम गैस स्टोव के पास जा सकते हैं और खेल सकते हैं. Of course not. It is false. So we have to write down F in front of first statement. Second one is, it is safe to play with sharp objects such as knives and scissors. Yes, it is safe or not? No, it is not safe. So second statement is false. So we have to write down F here. Third one is, it is all right to push your friends off the swings and not wait for your turn. ये ठीक है कि चलो हमने फ्रेंड को धक्का मार दिया और स्विंग से गिरा दिया और हमने हमारी वेट की भी टर्न की भी वेट नहीं की. तो इट इज़ ओके और नॉट? ऑफ कोर्स इट्स नॉट. So this statement is wrong. So we have to write down F here. Fourth one is, we can cross the road whenever we want to. हम क्रॉस कभी भी चाहे, जब भी चाहे तब कर सकते हैं. It is true? No, it is false. So we have to write down F here. We have to take care of signals, है ना? व्हीकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है. एंड देन वी हैव टू क्रॉस द रोड. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लास्ट स्टेटमेंट इज, इफ़ यू गेट हर्ट यू शुड इग्नोर इट. अगर आपको चोट लग गई है तो आप इग्नोर कर दोगे, फर्स्ट एड नहीं लगाओगे, कुछ नहीं करोगे. वो घाव सड़ रहा है, आप सड़ने दोगे. इज इट ट्रू? नो. So this statement is false. So we have to write down F here. Now see the page number 27. Exercise C. Choose the correct option. C. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं A, B, C, D. उसमें से आपको जो भी राइट वन है वो चूज करके टिक करना है. ओके. So first one we have, which of these should you not touch with wet hands? इसमें से कौन सी चीज़ है जो आपको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए? ऑप्शन ए, टॉयज एंड बैग्स. बी, पेंसिल्स एंड बुक्स. सी, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. एंड डी, गैस स्टोव्स एंड फायर क्रैकर्स. तो ऑफ कोर्स इट इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. हमें इलेक्ट्रिक वायर्स और प्लग और इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ है, एनी स्टफ ऑफ इलेक्ट्रिक थिंग, वी डू नॉट टच विथ वेट हैंड्स. ओके. Second one is, which of these can cause harm to us in the school bus? Options are, option A, sticking out face from the window. Option B, running behind the bus to catch it. Option C, getting off a moving bus.
एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो राइट है. सो आपको क्या बोला है कि कोज हार्म टू अस इन द स्कूल बस, हमें स्कूल बस में ये हार्मफुल हो सकता है. तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं, ऑल ऑफ दीज आर राइट. सो वी हैव टू टिक ऑप्शन डी हियर. ओके, नाउ सी द थर्ड वन. Which of these can help us stay safe on the road? Option A, zebra crossing. Option B, subway. Option C, walking on the footpath. And option D, all of these. So, our question is कि हमें क्या हेल्प कर सकता है रोड पे सेफ होने के लिए. तो रोड पे सेफ होने के लिए zebra crossing, subway and walking on the footpath, ये तीनों के तीनों हेल्प कर सकते हैं ना. सो वी हैव टू टेक ऑप्शन डी हियर. इफ वी हैव टू बी सेफ ऑन द रोड, वी शुड फॉलो ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज लाइट्स टेल व्हीकल्स टू स्टॉप, सॉरी व्हीकल्स टू वेट. इनमें से कौन सी लाइट है जो आपको वेट करने के लिए बोलती है. तो ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ग्रीन एंड ऑप्शन डी ग्रे. सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन. येलो सेज वेट, है ना. सो टिक द ऑप्शन बी एंड सी द क्वेश्चन. फिफ्थ, विच ऑफ दीज वुड यू फाइंड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. आप इसमें से कौन सी चीज़ है जो फर्स्ट एड बॉक्स में देख पाओगे. तो ऑप्शन ए बैंडेड एंड सीजर्स, ऑप्शन बी गाज एंड कॉटन, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक लोशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. सो वी कैन सी ऑल ऑफ दिस इन फर्स्ट एड बॉक्स. सो वी हैव टू टिक ऑप्शन डी हियर. See the next question. What is the immediate help given to an injured person? हमें इंजर्ड पर्सन को सबसे पहली जो हेल्प है वो कौन सी देनी चाहिए. तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फर्स्ट एड, ऑप्शन बी हेल्पिंग एड, ऑप्शन सी बैंड एड एंड ऑप्शन डी प्राइम एड. तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज़ राइट वन. फर्स्ट एड, हमें उसे पहले फर्स्ट एड देना चाहिए, है ना. देन हमें देखना चाहिए कि उसका घाव ज़्यादा है या कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वी कैन गो फॉर डॉक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव देम फर्स्ट एड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन कॉज फायर एट होम एंड कॉज हार्म. घर पे कौन सी चीज़ है जो फायर कर सकती है, मतलब फायर लगा सकती है और हमें हार्मफुल भी हो सकती है. तो ऑप्शन ए इज़ नाइफ, ऑप्शन बी इज़ सीजर्स, ऑप्शन सी गैस स्टव एंड ऑप्शन डी बेड. तो फायर किससे लगती है, नाइफ, सीजर और बेड से. नो, फायर किससे लग सकती है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन. टिक द ऑप्शन सी गैस स्टव. And see the last one. How should we wait for the bus at a bus stop? हमें बस स्टॉप पे बस की वेट कैसे करनी चाहिए. ऑप्शन ए पुश ईच अदर, ऑप्शन बी स्टैंड इन अ क्यू, ऑप्शन सी स्टैंड इन अ सर्कल एंड ऑप्शन डी रन अराउंड. सो ऑल ऑप्शन ए, सी एंड डी आर very harmful. We should wait for the bus at the bus stop in stand in a queue. हमें लाइन में खड़े रह के वेट करना चाहिए. सो टिक द ऑप्शन बी हियर. सी, आप अगर देख सकते हो मैंने यहाँ पे टिक करा है, बहुत नीट एंड क्लीन टिक हुआ है ना. अगर फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से चारों में से मैंने एक ही टिक करा है. सो यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि आपकी टेक्स्ट बुक है, आपकी वर्कशीट है, वो वेरी नीट एंड क्लीन हो. ओके, सो सी द एक्सरसाइज 2. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर देने हैं इन वन वर्ड लाइक. ओके, तो ऑप्शन ए गिव वन वर्ड फॉर
द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको वन वर्ड में आंसर देने हैं। फर्स्ट वन इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ द रोड marked with black and white lines under the cross the road used to cross the road. See, एक ऐसा पार्ट जो ब्लैक एंड वाइट है, जिब्रा जैसा है, और जिससे हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है? इट्स वेरी इजी, जिब्रा क्रॉसिंग, है ना। सो वी हैव टू राइट डाउन ZEBRACROSSING, जिब्रा क्रॉसिंग. Second one, and an underground path used to cross a busy road. अगर हमारा रोड बहुत ही बिजी है और हमें वो क्रॉस करना है तो what we have to use? We use subway. So answer is subway, SUBWAY. Write down in second one. Okay, and see the third one. What a red light says. मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल में लाइट्स है उसमें से रेड लाइट है, वो क्या कहती है? तो रेड लाइट सेज स्टॉप. सो आंसर इज स्टॉप. नाउ सी द एक्सरसाइज B. गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग. सी, यहाँ पे आपको दिए गए हुए हैं क्वेश्चन, उसके आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. ओके, लेट्स सी क्या करना है. फर्स्ट वन है शार्प ऑब्जेक्ट्स दैट कैन कॉज हार्म एट होम. 2 ऐसे आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो आपको घर पे हार्मफुल हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है नाइव्स कोमा सीजर. सी, यहाँ पे कोमा करना कंपलसरी है एंड हैंड राइटिंग शुड बी वेरी neat and clean. So answer is knives and scissor. Write down with your pencil and turn the page number 28. See the second one. What we can use to cross a road safely. मतलब ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जिससे हम रोड क्रॉस इजीली कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी. It's zebra crossing and subway. So write down zebra crossing, subway. Okay. Next question. Colors of a traffic light. So there are 3 lights in traffic signals. Okay. So we have to write down only 2 here. So write down red and yellow. You can write down green and red. Okay. जो आपको याद आए वो आप लिख सकते हो. ऐसा नहीं कि मैम ने लिखा है वही आंसर लिखना है. ओके. फोर्थ क्वेश्चन. कंटेंट्स ऑफ अ फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट एड बॉक्स में क्या कंटेन करा जाता है, क्या भरा जाता है? तो वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. सो जो आपको एग्ज़ाम में याद आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा है बैंडेड एंड कॉटन. सी, मैंने सभी के बीच में यहाँ पे कोमा किया है, आपको भी ये करना है. ओके, एंड हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. सो दिस इज़ योर होमवर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल डू इट बाय योर ओन. आपको पहले खुद से करना है कि चलो ये सारे क्वेश्चन रीड करो फिर आंसर दो. अगर कहीं आपको नहीं आ रहा, कहीं आप अटक रहे हैं, तो ही आप PDF की हेल्प लेंगे. ओके.